Nutrition. Nutrition is the process of taking food to carry out different function of the body needed for the survival of the organism. Mode of nutrition is of two types. One is heterotropic and another one is autotropic. Okay. Autotropic mode of nutrition means prepare their own food, and heterotropic mode of nutrition means depend upon the other organism for their food. Okay, so these are heterotropic mode of nutrition is of three types. One is saprophytic, parasitic and holozoic mode of nutrition. तुम्हारा एग्जाम्पल को भलसे मन रखा पड़ो और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी देती तो saprophytic mode of nutrition कौन ना obtain their food from the dead and decaying matter. Okay, example देजी mushroom etc. The parasitic mode of nutrition कौन obtain their food from other organism without killing them, just like lice, liver fluke, tapeworm. These are examples. Okay, you have to remember this. Okay, holozoic mode of nutrition कौन the complex food particles are intake. Okay, we are intaking complex food particles like carbohydrate, proteins, fats, okay, and are converted into the simpler form, just like amino acid proteins to amino acid hoji. All human beings, also cats, dog, everyone, जो मैंने कौन करुँच होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तुमको यहाँ मन रखा पड़ो. सेकेंड आम देखू इम्पोर्टाट जिनस जोटा there are 5 steps involved in the process of nutrition of human being. Okay, ये 5 step को मन रखा मुझे केमती कही ना मुझे इन डाई आप आस इज एमती आम मन रखो. जदि आम 5 steps को टिके टिके बुझा चेष्टा करवा ताले कौन द फर्स्ट स्टेप हूँ इंजेक्शन. इंजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट taking food into the body is called ingestion. Second process is digestion. It involves the breakdown of nutrients such as protein into amino acids, carbohydrates into starch and fats into fatty acid and glycerol. जोटा तमे digestive system रे पढ़ीथिलो. Second process is completed. Third process is absorption. Absorption कोड हुए मन पके कहिथिल maximum absorption कोड हुए small intestine हुए villi like structure, and it involves absorption of nutrients from the food by blood. जानछ blood ही सब किसी absorb करे. And assimilation. Assimilation is a process. It involves the process of transporting nutrients and water to the all part of the body by blood. तुम कौन जानछ blood function होची कौन blood कौन करे ना blood transport nutrients and other substances ट्रांसपोर्टिंग काम. तो सी कौन कर ट्रांसपोर्टिंग कर न्यूट्रिएंट्स कर वाटर को कर कौटी पहुँचेब ना जो जो पहुँचे दरकार थी नीडेड पार्ट को से पहुँचेब. कौन ये आमर सरीगले कि न्यूट्रिशन ना आउ गोटे स्टेप्स अच्छी जो मैंने वेस्ट जोगुरा अच्छी वेस्ट फूड जोगुरा अच्छी से भी तो कौन दरकार इजेक्शन हवा दरकार ना नहीं. तो इजेक्शन इज द फाइनल स्टेप. फिफ्थ स्टेप इट इनवॉल्व्स द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फूड आउट फ्रॉम आवर बॉडी है. तो तुम मन रखार कौन अच्छी स्टेप्स सिक्वेन्सटा मन रख इन डाई आप आस एंड इजे है एमती मन रख. तो 5 स्टेप्स तुम सिक्वेन्सटा पचारि पारे है. तुम जमी पचारि पारे कौन एसिमिलेशन रे कौन हुए है. एसिमिलेशन ही 5टा भितर गोटे डिफिकल्ट. तो टर्म मीनिंग कौन से कौन करे है. तो ये अनुसार यहाँ मन रख न्यूट्रिशन एति है कि इम्पोर्टाट सेमती किसी ना. आउ जोटा इम्पोर्टाट हूँ कहली कौटा ना तुम सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक होलोजोइक एग्जांपल मन रख. होलोजोइक तो किसी असुविधा नहीं. मेन हूँ पैरासाइटिक आउ सैप्रोफाइटिक मन रख. Respiration. Respiration is act of breathing or releasing of energy. Breathing is what? Breathing is exchange of gases. And what is cellular respiration? Here another term. Cellular respiration is what? The process of respiration of release of energy inside the cell. That is your cellular respiration. And the most important thing in the respiration, aerobic and anaerobic respiration. In the aerobic respiration, what happens? Takes place in the presence of oxygen. Occurs in mitochondria. We will see. End product is carbon dioxide and water. More amount of energy is released. So here is the equation: glucose
first converted into pyruvate, as you know, and after that it will convert into carbon dioxide or water and energy, and more energy is released in this process, aerobic respiration. But in case of anaerobic respiration, it is takes place in the presence of, in the absence of oxygen or lack amount of oxygen occurs in the cytoplasm. Ends product are alcohol or lactic acid. Less amount of energy is released. Equation is what? In yeast, glucose converted into pyruvate, then ethanol plus water plus energy. In muscle cell, glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm, and after that the pyruvate converted into lactic acid and energy. Okay, now see, glucose 6 carbon molecule, okay, converted into pyruvate. कोठी साइटोप्लाज्म रे 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी बट तापर देखो एब्सेंस ऑफ एनर्जी छाड़देवा आम फास्ट देखा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रे कौन हुए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रे माइटोकॉन्ड्रिया रे कौन हबो ना 1 कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी प्रोडक्शन हबो कौथरे ना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कौठी इन माइटोकॉन्ड्रिया तापरे देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गोटे अच्छी लैक ऑफ ऑक्सीजन ए दीटा जाक जीवे कौथरे ना anaerobic respiration रे इन anaerobic respiration okay absence of oxygen in the yeast रे कौन हम ना कौथे कन्वर्ट हम इथानल जोटा कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी है लैक ऑफ ऑक्सीजन आम मसल सेल रे कौन हम ना लैक्टिक एसिड आउ एनर्जी रे प्रोडक्शन हम लैक्टिक एसिड इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स को भल भाव मन रखा पड़ो एंड को प्लेस रे एटा होची कोटा को प्लेस रे होची ओके रेस्पिरेशन इन ह्यूमन होची पास जो अच्छे सीक्वेंसटा बहुत इंपोर्टेंट जमती कि नॉस्ट्रिल्स नजल पैसेज नजल कैविटी pharynx larynx trachea bronchi lungs and bronchioles alveolar sacs and blood capillaries mechanism of breathing is also important कारण तार मुवमेंटा जोटा होची डायफ्रागम रो मुवमेंटा होची रिप केस लिफ्ट अप होची ना ये होची तो सेटा सब इंपोर्टेंट रहूची कम टू द डायग्राम ओके आम देखिए एयर केमती पास करूची एम केमती ब्लड रे कौन होची ना गैसियस एक्सचेंज होची पूरा होल प्रोसेसटा देखिबा विदिन फ्यू मिनिट्स ओके तो फर्स्ट होची कौन हमर आसीबो नॉस्ट्रिल्स आसीबो तो नॉस्ट्रिल्स का काम कौन एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड air passing through the nostrils is filtered by what? By means of fine hair that lines the passage रे कौन अच्छी hair like structure अच्छी जोटा filter करे तापरे कौन आसीबा तापरे आसीबा pharynx ठीक तो pharynx रे काम कौन pharynx रे गोटे पॉइंट मन रख common passage of food and air यदि circulation पड़े तो यदि हम देखिए respiration point of view रो trachea बहुत important तापरे जोटा आसीबो ट्राकिया कौन ट्राकिया होची थिन वॉल ट्यूब मेड अप ऑफ सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कौन काम करुची हेल्प्स कौन करुची ना हेल्प्स टू होल्ड देम इवन व्हेन द एयर इज लेस इन इट सो दे डू नॉट कोलैप्स एयर कम थिला बेले भी किसी असुविधा हबनी जेमती से सेटा को तार सेटा होची इंपोर्टेंट देखो रिंग लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स आसिला तापरे कौन होची लंग्स जो होची एंट्री करुची ब्रांच जोटा को आम कौन कौची ब्रोंकाई कौन हम एंटर करिवो सेटा कौन हम फर्दर डिवाइड करिवो हला फर्दर डिवाइड करिवो सेकेंडरी टर्शियरी ब्रांचेस करिवो ता सामना रे कौन थिवो गोटे बेलून लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि आम कहि परिबा अल्वियोली सैक्स
বা alveoli are present. Okay, millions of alveoli is present. Okay, what is the significance of the alveoli? तो सिग्निफिकेंस आम देखा जो गैसियस एक्सचेंज आमर हुए सी ही सब इम्पोर्टेंस करे. तो केमी करे ना चारिपटे निश्चित भाव में कौन थी ब्लड कैपिलरीज थी ब्लड गैसियस एक्सचेंज पाई. हम तो कौन अच्छी ना इट इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. जब ये एल्वियोलरी हुए चारिपटे कौन अच्छी ना नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज कौन अच्छी सराउंड होगी अच्छी. कौन पाई अच्छी ना ब्लड कैपिलरीज भितर कौन अच्छी ब्लड अच्छी. ब्लड भितर कौन अच्छी ना गोटे रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जोटा कि आम कौन कहूँ हिमोग्लोबिन. कहीं तार इंपोर्टेंस हिमोग्लोबिन कौन ना हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन. मुझे ऑक्सीजन को देखिए बाइंड कर कौन कर ना ऑक्सीजन आ भितर जो आसी पहुँचो कौन कर ये हिमोग्लोबिन सहित बाइंड कर. कहीं बाइंड करके नहीं जीव सेल मान पाखु. तो सेल मान पाखु देख ऑक्सीजन जीव कौटी सेल पाखु जीव जान तो हिमोग्लोबिन नहीं कि जीव. तब सेल कौन हम यूटिलाइज हो सेल है सेल यूटिलाइज हो सारापर सेल ब्लड को कौन दब रिटर्न इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड दब. तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन आसी पहुँची ये ब्लड स्ट्रीम में पहुँची सी कौन हम ना से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कर पुणी एल्वियोलरी सैक्स भितर थिबा एयर को छाड़ीदेव. जो लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज हो तो सी कौन कर बाहर को एक्सपेल आउट करदेव. दिस इज द होल प्रोसेस इनवॉल्व इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस. मन रख एल्वियोली कौन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये हूँ ऑल अबाउट रेस्पिरेशन प्रोसेस. And what is mechanism of breathing? Inhalation and exhalation. Inhalation का during inhalation the thoracic cavity means the chest cavity expand. Okay, तो मेरा परफॉर्म भी करथिलो क्लास रे तो जदी निजे करिवो भी जानि परिवो. एंड कौन होची ना रिब्स लिफ्ट ऑफ रिब्स एंड जो रिब्स जो के रिब्स केज अछि हला एटी जो रिब्स केज अछि ए गोटा रिब्स केज जोटा अछि तो कौन हो लिफ्ट अप है कौन देला डायफ्रागम बिकम्स फ्लैट इन शेप. हम कही तुम हाथ मारिकी मूवमेंट को भी तुम ऑब्जर्व कर पार है क्लास से कहला जोटा डायफ्रागम बिकम डोम शेप कौन एक्सहेलेशन हम. डोम शेप माने तार जो शेप अच्छी से शेप रे ही शेपटा को मेंटेन कर जिते कौन हम रिपकेस डाउनवर्ड मूव कर आम जिते कौन करूँ एक्सहेलेशन करूँ है एक्सपेल आउट करूँ एयर को तो से हम यही सब. तो यही जो जिनस को तुमको मन रखा पड़ो केत इनहेल जो करुच ऑब्वियसली यहाँ गोटे बेलून शेप जी लंग्स गोटे बेलून भाविबा तो जिते तुम इनहेल करुच मैंने एयर को एंटर करुच निज भितर तो कौन हम लंग्स कौन हम वॉल्यूमटा इंक्रीज हम ना नहीं. तो एयर एंटर्स इनटू द लंग्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस. किंतु तुम एक्सहेल जो करुच एक्सपेल आउट कुछ जिन करुच गोटे बेलून एयर जो बाहरी जाऊँगी तो सेटा कौन हम वॉल्यूम ऑफ द लंग डिक्रीजेस एंड द एयर एक्सिस्ट फ्रॉम द लंग्स. सर्कुलेटरी सिस्टम जोटा हूँ हार्ट विषय पढ़ा. तो हार्ट रो जो आम देखा दिस इज योर डायग्राम ऑफ हार्ट. गोटे डायग्राम थिला तो फास्ट ये डायग्राम को देखो. डायग्राम रे कौन देखुच डायग्राम रे देखुच लंग्स अच्छी हार्ट रो चार्टा चैम्बर अच्छी आउ कौन अच्छी तो आम फास्ट बेसिक जिन जाना. फर्स्ट क्विकली स्टेप रे आम कौन करवा ना पूरा प्रोसेसटा को डिस्कस करदेबा. प्रोसेसटा कौन ऑब्वियसली लंग्स रु कौन आसूची ऑक्सीजनेटेड ब्लड आसूची कौन आसूची सी गोटे के पैसेज दे जाऊँगी जोटा कि आम पल्मोनरी वेन को जोटा एक्सेप्शन कौन हो ओनली वन वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज योर पल्मोनरी वेन. तो आसी कौट पहुँचो ना लेफ्ट एट्रियम रु गोटे अच्छी तार पाइकोस्पिड भाल्व अच्छी है बैकवर्ड फ्लो न होगापी है
तो तापरे लेफ्ट वेंट्रिकल को आसीबो तापरे लेफ्ट वेंट्रिकल रु कोठी के आसीबो बॉडी को आसीबो कनेक्टेड थिबो बॉडी को है थ्रू कैपिलरीज तो सेटा जो आसीबो कोन आसीबो आयोटा दे के आसीबो आर्टेरी जोटा कि आम लार्जेस्ट आर्टेरी आम ताकू कही थाउ तो ये जब आसो लार्जेस्ट आर्टेरी आसो तापर कौन हम ना ऑक्सीजन जो आम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आणुचु ना पहुँचाऊँ ब्लड डिफरेंट डिफरेंट आमर बॉडी पार्ट्स पाखक तो ऑक्सीजन कौन हम यूटिलाइज हो बाहर कौन कार्बन डाइऑक्साइड माने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इन द सेन्स से जो ब्लड रे ऑक्सीजन रहिबो नाही माने ताकू ऑक्सीजन मात्रा कमी जीवो आम ताकू कहि परिबा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर है तो लेस ऑक्सीजन थी तो सहीटा कौन हम ना वेना कावा थ्रू रे वेना कावा हूँ कौन वेन्स है तो वेन मेन ब्रांच तो वेना कावा थ्रू रे कौन हम ना वेना कावा भी दी प्रकार अच्छा कारण ब्लडटा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नब सी केवल कौन एमती गोटे डायग्राम देखिए तल बाट नब कि तार डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन नब जमीक कि अपर पार्ट भी नहीं पारे अपर पार्ट जो वेना कावा आणिकी ब्लड पहुँचेब ताको आम सुपेरियर कहबू जो लोअर पार्ट आणिकी पहुँचेब से आम कौन कहबू इनफेरियर कहबू है तो वेना कावा कनेक्ट हो क्या सहित बॉडी सहित कनेक्ट हो पुणी जीव राइट एट्रियम तापर ट्राइकस्पिड भाल्व देकी कौन हम ना राइट वेंट्रिकल्स देकी पुणी कौन हो ना पल्मोनरी आर्टरी देकी लंग्स को जीव तो ओनली वन आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज योर पल्मोनरी आर्टरी ये तो आम पॉइंट जानीगले एबे आम देखा ये देख तो आम कौन पढ़ी एक्सेप्शन तो आम जानीगले एबे आम ये जो आउटारू आम कौन करिए आर्टेरी स्पेसिफिकेशन को जीवा आर्टेरी कौन जानिबा तार कौन कौन केमती कौन रही आम वेना कावा को देखिकी आम कौन करिया ना कैरेक्टरिस्टिक्स को निजे डिस्कवर करवा डिस्क्राइब करवा जहाँ भी तुम कहीपर तापर आउटा को जो देखुच आउटा क्या सहित कनेक्ट हो हार्ट सहित कनेक्ट हो हार्ट चैम्बर सहित डायरेक्टली कनेक्ट हो जोटा कि लार्जेस्ट आर्टेरी तो आम कहीपर यहाँ हूँ थिक इलास्टिक है तो कौन कहीपर कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी कहीपर ना ना आउ कौन कहीपर जेहेतु हार्ट सहित कनेक्टेड होते आर्टेरीज हाव हाई ब्लड प्रेशर हाँ ना ना तो आर्टेरी ब्लड प्रेशर सॉरी ब्लड प्रेशर कौन प्रेशर हूँ कौन थी हाई थी आउ कौन थी जेहेतु यहाँ थिक अच्छी इलास्टिक अच्छी तो तार ल्यूमेनटा कौन हो कौन थी ल्यूमेनटा वाइड थी वाइड थिले इलास्टिक दरकार कौन पड़ता इलास्टिक जेहेतु अच्छी तो सेटा कौन हो दरकार नारो है तो ल्यूमेनटा कम हो तो यहाँ मन रहा प्रेशर हाई तो प्रेशर हाई रु तुम ब्लड प्रेशर डेफिनेशन आसो सिस्टोल तापर तुम जो चैम्बर रु सिस्टोल और डायस्टोल आसो कॉन्सेप्ट ओके तो आम कौन जानीगले लार्जेस्ट आर्टेरी आउटा ताकू नहीं आम कौन करदे ना आर्टेरीज जो अच्छा जो से आर्टेरीज मानकर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कवर कले एवं देखिए वेना कावा तुम कौन जान वेन है तो लार्जेस्ट आम जो वेन कहवा तो हूँ वेना कावा तो आम जो देखा वेना कावार टू टाइप्स आम जानते गोटे सुपेरियर आ गोटे हूँ इनफेरियर सुपेरियर जोटा अपर पार्ट रू आणुची आउ इनफेरियर आम कौटा कह लोअर पार्ट रू आणुची आम जो देखा वेना कावारू वेन्स रु डिस्कवर करें तो वेन्स देख क्या सहित कनेक्ट होती बॉडी रू थ्रू एम जो जाने कैपिलरीज तापर लास्ट डिस्कस करवा तो जेहेतु एम बॉडी सहित कनेक्ट होती डायरेक्ट हार्ट सहित होना तो फर्स्ट कथा एम प्रेशर कौन थी लो प्रेशर थी आउ कौन ना एम थिन वर्ल्ड ओके आउ कौन एमकर जो वाल्व्स ता भितर भाल्व थी कहीं भाल्व थी गोटे पाइप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाऊँगी ऑक्सीजन रिच नुह है तो आम कौन कर बैकवर्ड फ्लो तो हबार चान्सेस थी ना तो से आम कौन कर भाल्व देदेबा तो से कंटेन भाल्व है फॉर टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड है बैक फ्लोटा प्रिवेंट करने को प्रेशर कौन थी ना लो थी आउ देख आउ गोटे पॉइंट ये पड़ो कैरी ब्लड फ्रॉम व्हिच टू व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट ओके बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट ओके तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो से लिखला आर्टेरी कौन करे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट है हार्ट रू नहीं जाए टू द डिफरेंट बॉडी एंड एम जब कह वेन्स कथा देखा तो कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट देख देखो ये टुवर्ड्स द
away from the heart, किए निए aorta बा जोटा artery towards the heart, किए निए vena cava, veins. एमती मन रखियो. एबे capillaries कौन करे ना carry blood from the arterioles to the venules. ये जो small जिनस देखुचे सेगुड़ा होची तार ब्रांचेस है आर्टेरियल ब्रांचेस आर्टेरियल्स ताको जोटा आम कैपिलरीज भी कहू. एबे एक्सेप्शन केस जो मुझे कहली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट इन पल्मोनरी आर्टेरी बिकॉज पल्मोनरी आर्टेरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टेरी एक्सप्रेशन एक्सेप्शन वेन्स कैपिलरीज ओके कैपिलरीज कौन देती एक्सट्रीमली लो blood flow smoothly without any jerk. Phloem is very small and valves are absent. Okay. देखिए बे double circulation. As you know, the blood circulates through the heart twice. Hence, it is called double circulation. Feels ro केतरा chamber सब देखिबो. Blood pressure. The force that blood exerts against the wall of the vessel, that is called blood pressure. है systolic pressure diastolic pressure सेटा मन रखिबो. Systolic pressure कौन? The pressure of the blood inside the artery during ventricular systole. Systole means मन रखिबो contraction. Ventricular देखो ventricle सहित निश्चित कनेक्ट थिबो. Ventricular systole कहला माने है भेंट्रिकल सहित कनेक्ट थी. तो जो कंट्राक्शन होची सेटा को आम कौन कहूँ ना सिस्टोलिक कंट्राक्शन है. तापर आसो गोटे कौन आसो ना डायस्टोलिक निश्चित भाव तार अपोजिट थी रिलैक्सेशन इन द आर्टेरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल बा रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर. ओके नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रो केते रहूची सिस्टोलिक और डायस्टोलिक सेटा मन रखिबो. आउ कौन हाइपोटेंशन एंड हाइपोटेंशन ये टर्म मन रखिबो. आउ गोटे इम्पोर्टेंट टर्म जोटा होची कार्डियक साइकिल है. कार्डियक साइकिल कौन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट जोटा को हमें कार्डियक साइकिल कही था है. तो एबे हाँ आउ गोटे इम्पोर्टेंट जिनस देख जिते बड़े भी आम कहू जे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कोटा कंट्राक्शन कोटा एक्सपेंशन जानी होनी तो लेफ्ट एट्रियम को आसीबो लेफ्ट एट्रियम को जो ब्लड आसीबो एटा कौन हम रिलैक्स हो. लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड. तापर कौन हम जो ब्लड एठू पास हम अलग जगह को तो कौन हो कंट्राक्ट हो. इट कंट्राक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर कौन हम एक्सपांड हम है. यहाँ हूँ कंट्राक्शन आउ एक्सपांशन. Okay, so what is the function of circulatory system? The most important function of the circulatory system is what? Transporting oxygen throughout the body. कहीं आमर जो ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन की हेल्प करुँची कि पंपिंग डिवाइस हार्ट. तो ब्लड सब कौन करुँची ट्रांसपोर्टिंग काम करुँची है. तो ब्लड आम से जाने ब्लड कंपोनेंट तो भलसे देखिबो. ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू है जो क्लास 9th रे थिला. प्लाज्मार कौन कौन पार्ट है. तो आउ तापरे रेड ब्लड सेल्स अच्छी तादे व्हाइट ब्लड सेल्स अच्छी. रेड ब्लड सेल्स होची केमता सेप तादे न्यूक्लियाई नाही लो न्यूक्लियस कैरी ऑक्सीजन किए करे हिमोग्लोबिन. तो यही सब जिनस हिमोग्लोबिन रो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यू. हिमोग्लोबिन आल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द लंग्स. बेसी करे कम करे. तापरे आम देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स है. व्हाइट ब्लड सेल्स कौन करे स्पेशली व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट्स इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम अस डिजीज. यहाँ तार इम्पोर्टेंट पॉइंट. दिस इज बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प्स टू fight against germs and other foreign bodies which
causes diseases, right? तो ये important. Platelets सेमती देख एलिमेंट ऑफ ब्लड देखाई प्लाज्मा केते परसेंट प्लेटलेट है तापर व्हाइट ब्लड सेल टाइप लेस इंपोर्टाट कि तुमको मन रखा पड़ो कौटी प्रोड्यूस हुए बोन मैरो रे रेड ब्लड सेल प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स है देखाई रेड ब्लड सेल्स platelets and white blood cells are produced in the bone marrow.